Hello everyone and welcome to PendulumEdu. Good morning. Thank you for joining in, learners. I'm right here back with you, right? So we are here for English for SSC. As I said that we're going to, work on this for long, and the course has been going on and on and on, and finally we are like we've come to the reading ability portion. बहुत लोग इसका request कर रहे थे. So grammar portion we've covered completely, vocabulary we've covered completely. Now we're left for reading ability. Close passage we have done. We are doing reading comprehension. This is the second. This is part 2. This is the second session for reading comprehension. We did the first one on Saturday. So those who have missed the session, they can go to the playlist to watch the recorded session. So this is part 2, and reading comprehension practice session is what we are now talking about. Okay, this is the practice session. And I must tell you that we're going to do questions and questions. Those who are new, I must tell you कि 10 बजे रोज we go live for this course, SSC course session. And this is a complete free course that is running for you learners, those who are planning to prepare for SSC, those who are preparing for SSC, I would say they should be right here. Because it's a comprehensive course, not just for English, but for all the other subjects that are there. Abhi to SSC, since it's postponed, so you've got ample of time to practice. So you can definitely practice for yourself. All right, great. Good morning, Chandan. Good morning. Others, those who have joined me, can quickly comment and let me know, guys. फटाफट से comment करके मुझे बता देंगे that you guys are there, you've joined me, and we can now definitely, keep on going. Yes, okay, so Abhishek is also there. Good morning, Abhishek. Great. So let's begin, learners. Slowly and gradually, those who join me can comment and let me know. Let's begin now. We did 2 approaches. We did PQ approach. We did QP approach. So I'm going to give you PQ approach because I have the passage right here in front of you. So I'm going to give you 1 minute to read this much part. We will go to the questions and see which questions we can answer using this part. And then we can definitely come back. Or what we can do is, we can go to the questions first. You can give a quick read to the questions. You can just skim. And you can come to the passage to locate the questions. Which approach do you want me to use? Quickly tell me, passage question or question passage? Which approach do you want me to use, learners? Ashish, hello, Ashish. Good morning. Yes, quickly let me know. I'm waiting for responses. All right. PQ, Abhishek is saying PQ approach. कोई और भी मुझे बता दे एक बारी, so we can, Hello, संजीव. संजीव, जो आप कह रहे हो टेलीग्राम, मैंने देखा था, बट मुझे कोई आपका डाउट मिला नहीं वहां पर. आपने फिर से मुझे बोला है तो मैंने इसको रीइंस्टॉल किया है एक बारी, रिफ्रेश करके रीइंस्टॉल, जो भी आप कहते हो. आई डिड इट, सो आई विल ट्राई टू गो थ्रू इट, एंड आफ्टर द सेशन टुडे, आफ्टर द सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर. ओके संजीव, कोई भी चलेगा. चलो फिर एक काम करते हैं, फटाफट से सब पैसेज क्वेश्चन कह रहे हैं तो फटाफट से रीड इट. आई एम गिविंग यू 1 minute. 1 minute is there. Quickly read it and then we'll go to the questions. Your 1 minute starts now. All right.
So I guess the reading is over, reading part is over. This is a simple paragraph. यहाँ पर stone carving और ये सब बताया गया है. C-type की ज़्यादा बात हुई है, S-type की ज़्यादा बात हुई. याद रखना, it's a very soft stone, okay? So now this is important. I hope the reading is done. I am going ahead on the questions. Let's see, is paragraph say, are there any particular questions that we can answer? Hello, Shani. Good morning. All right, now quickly have a look at the questions. Which of these stones is very soft and easy to mold? Very easy. मैंने अभी mark भी किया. We've got the answer. Quickly give me the answer. Which of these stones is very soft and easy to mold? See, reading comprehension is very simple because the answers are right there in front. You just have to comprehend. Comprehend. That's why it said comprehension. Shani, Ashish, Chandan, try to, answer quick. Be quick. Let me know the answer. Shani, everyone, Ashish, Abhishek, sit tight. That's right. Absolutely correct option to sit tight. Very well done. Chandan, that's right. That's right, Chandan. Very good. Very good. That's right. Let's go on to the next question. Let's see, can we answer that? Which is the final process in? Which is the final process in the production of bees? अभी हम production की बात की नहीं है. Final process वहाँ पे वैसे दिया था, but polishing, drilling, chipping अभी हमने नहीं, तो we'll see this later. Shell objects were mostly made at Nageshwar and Balakot. अभी हमने ये names नहीं देखे. These are the keywords. ये क्या है हमारे लिए? Keywords. अभी हमें नहीं पता. Then चलो फिर अभी एक ये है, सो देख लेंगे, वापस से रीड करेंगे. यहां हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. इसके बाद का पार्ट पढ़ते हैं. अगेन 1 minute. You have 1 minute so to answer it quickly. आशीष, how come second? फटाफट देखो. नाउ मेकिंग ये बताया गया, अभी देखो मेकिंग. स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. Finally, drilling. Drilling completed the process. Drilling is the final process. हाँ, अभिषेक बिल्कुल नहीं था. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं drilling. नागेश्वर and Balakot, these are the keywords we were looking forward to. These are the keywords. Are near the coast. These were specialized centers for making shell objects which were taken to other settlements. Similarly, it is like the Finnish. Okay, what is the reason? Because they are near the coast. So उनको ट्रांसपोर्ट के लिए शायद इजी होता है. That's why. So we have got our answers. देखिएगा. Final process is drilling. That's, we have got it. I guess you all understand it. Final process is drilling, right? Option 2, drilling. Is it clear? And then we have shell objects were made at Nageshwar and Balakot because the women loved to wear bangles. Shells were readily available in these coastal areas. That's right. Shells were transported here from Lothal. This is not mentioned. Specialized drills we mentioned nahi hai. But yes, shells were readily available in these coastal areas. Chandan, Abhishek. अच्छा आशीष, आपने ड्रिलिंग, अच्छा सेकेंड आपने बोला, तो मुझे लगा आप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ही 1 से 2 बार आंसर कर रहे हो. दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक नोट ऑफ इट. ओके आशीष, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. वेरी वेल डन अभिषेक, चंदन, आशीष. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन 2, shells were readily available in these coastal areas, which is right. Yes, that's correct. Shall we go ahead now? Next. Again, I'm giving you 1 minute, learners. You have 1 minute to go through it. Quickly go through it. 1 minute you guys have.
Yes, quickly. I guess the reading part is done. 1 minute is over. Is it done? Okay, yes, alright. Rabindranath was a formidable literary force. This implies he was what? अभी हमने देखा नहीं है formidable literary force. If you know the meaning, you can definitely answer. Literary, so we're not talking about landowner, orthodox educationist, an avid reader. No, he is not a reader. Rabindranath was a powerful writer or an orthodox educationist. What? One or two? Very simple. Even if we have not gone through, we can answer it because we know who Rabindranath Tagore is. Yes, quickly. Ashish is saying, be an avid reader of books. Is it? Ashish, are you sure that he's a reader, an avid reader of books? And it's given in the passage? Yes, Chandan and Abhishek, that's right. Powerful writer. That's absolutely right. A powerful writer will be the correct one. Yes, Sanjeev, absolutely right. So without going on to the passage, sometimes you can have the answer through common sense and the sort of intellectualism that we have. Yes, that's right. A powerful writer, which is absolutely correct. With what aim was Shantiniketan established? What was the aim of establishing Shantiniketan? We don't know the aim, but yes, let's see. It was given in the last part, I guess. Let's go to the passage because I can relate to creative minds. I can relate to this. Serenity, a perfect place. Okay. Alright, अभी तक ही नहीं दिया गया है. One in every step, every break. Okay. With the aim of helping education go beyond the confines of the classroom. Okay. This was the aim. This was the aim. Shantiniketan grew. Okay. With the aim of helping education go beyond confines of the classroom. All right. Someone is saying that it will be 4 and 2. 4 and 2. To attract most creative minds, to encourage education outside the classroom, to make it perfect place of meditation. Not meditation, not birds and this. अब बताओ उसको पढ़ने के बाद मैंने जो अभी हाईलाइट किया है लाइन, अब what do you understand? To attract the most creative minds, to encourage education outside the classroom. Yes, it's very simple. See, go beyond the confines of the classroom. Confines, that is restriction. So going beyond that will definitely be that we are going encourage education outside the classroom as well. Right? सिर्फ classroom teaching या theoretical parts नहीं, we're talking about the practical, implementation of it. So we have to encourage education outside the classroom. That's right. Third one. Yes, Abhishek. Third, not second. Sorry. Second is incorrect. We will take third one. ठीक है? दिया हुआ है क्रिएटिव माइंड आशीष, कहां पर दिया हुआ है? Grew Shantiniketan grew into the Vishwa Bharati University in 1921, attracting some of the most creative minds in the country. एक बात बताओ, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है. एम इज दिस आशीष, एम ये दिया हुआ है, एम ऑफ हेल्पिंग एजुकेशन गो. व्हाट इज द एम? विद द एम ऑफ दिस. उस एम से क्या अचीव होगा? दिस इज द अचीवमेंट, बट एम तो यही है. दिस इज द एम. Not at all possible, Chandan. Creative mind दिया जरूर है, but it is given to confuse you. I'm reiterating the fact. बहुत clearly दिया है, with the aim of helping. जब state किया गया है कि aim क्या है,
बाद में कॉमा के बाद लिखा है अट्रैक्टिंग सम ऑफ द मोस्ट, मतलब उसका परिणाम ये होगा, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होने का परिणाम क्या होगा, दैट्स गिवन, बट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने का कारण तो पहले दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है आशीष, ओके नो प्रॉब्लम। चले क्लियर है? एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम आशीष हु इज इन डाउट? Anybody else except Ashish who is in doubt? Chandan, all right, great. Okay, next. We're going ahead on to the next part. Anybody? Abhishek, Sanjeev, Vishwasarupam, Siddharth. Anybody who is in doubt? No problem. So let's go ahead now. Next one says the word unfettered suggests. बिना पैसेज में जाए क्या हम इसका मीनिंग ले सकते हैं? नहीं, ठीक है, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मीनिंग इट डिपेंड्स ऑन द टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट दिया है उस पर डिपेंड करता है मीनिंग, राइट? सो वी हैव टू गो बैक एंड वी हैव टू चेक फॉर इट। देखेंगे, वी हैव टू गो बैक। अनफेटर्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड होता है वैसे तो, अनफेटर्ड का मीनिंग होता है अनरेस्ट्रिक्टेड। देखिएगा पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है ये रहा वर्ड। A place of learning that is unfettered by religious and regional barriers, मतलब वहां पर किसी फ्री है वो, वहां पे किसी प्रकार की कोई भी बैरियर या कोई भी रुकावट नहीं है। सो इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब उस चीज को रोका नहीं जा रहा, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। So what will be the answer? Free from barriers outside the classroom, restricted by regional differences, bound by religious beliefs. Abhishek says first होगा, बिल्कुल correct है Abhishek, free from barriers, that is unrestricted. Very well said Abhishek. ठीक है, चंदन तुम क्लासरूम में क्यों आ गए? फिर क्लासरूम पर क्यों आ गए? वहां पर लिखा हुआ है जब अनफेटर्ड, बैरियर्स वर्ड भी दिया है वहां, फिर भी आप 2 पे जा रहे हो। Yes, 1. Chandan, 1. Sanjeev, Ashish, Abhishek. That's correct. So it is free from barriers that we are talking about, which is absolutely correct. So when, now it's simple, we can now quickly go ahead. What did Shantiniketan initially serve as? It was a classroom, a spiritual center, a holiday resort, or a summer house. What was it? Okay. Third number के लिए restricted by, see this is opposite. This is opposite. This is restricted. ये रुकावट किया जा रहा है. This is free, unrestricted. ऑपोजिट है संजीव, तो थर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, शांति निकेतन इनिशियली व्हाट वाज इट? It was a classroom, a spiritual center, a holiday resort, or a summer house. Now it's given right here. Let's quickly go and check. So Shantiniketan established in 1863. It grew into, what was it? Vision of learning. Is it given? All right. Yes, it's given here. To call the place an abode of peace because of the serenity it brought to soul. An abode of peace. So what do we understand by abode of peace? That is a spiritual center. Yes, a holiday resort and summer house. So yes, Chandan, that's absolutely right. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. It's option 2, a spiritual center. Later it developed into a learning space, or you can definitely say a place where there was learning going on. That's right. Option 2 is right. जिन्होंने भी कहा है spiritual center, that's absolutely correct. Yes, that's right. A spiritual center. Next, we're going ahead. Which of these statements about Shantiniketan is not true? So we need to figure out the one that is false, right? We're talking about one that is false.
It grew into Vishwabharati University. This is true. We have already read it. Is located in the westernmost part of Bengal. We've read it. At Shantiniketan, classes were held in the open air, and Shantiniketan was set up by Rabindranath Tagore. We need to see. Westernmost part, is it right? It grew into Vishwabharati University. That's right. It is in westernmost corner of Bengal. No, it's not true. He bought. Wait, let us check. Maharshi Debendranath, father of Rabindranath, was traveling the westernmost corner when he came across a landscape. बिल्कुल, तो इन्होंने वहीं पे शुरू कर दिया था, तो वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में भी स्टेटेड है. एंड वेयर यूज्ड टू क्लासेस कहाँ पर होती थी शांति निकेतन में? Quickly, classes, with classes being held in the open air. This is also right. And oh, it's very simple. It's option 4. It was not set up by Rabindranath Tagore. It was his father जिन्होंने set up किया था. इनके father ने set up किया था. Rabindranath Tagore ने नहीं किया था. So this is false. This is false because it was his father who had set it up, not Rabindranath Tagore himself, right? Chandan, so I'm really sorry, but second and third, these are incorrect. The answer will be option 4. Rest, everything is true. True, true. Yes, Abhishek, 4th. देख रहे हो कितना सिंपल था. हम भी रविंद्रनाथ पढ़ के हम जा रहे थे. Yes. Okay, so let's now go ahead. When did Shantiniketan grow into a university? When did Shantiniketan? What was, बहुत सिंपल है. चलो मुझे जरा बिना पैसेज पर जाए ईयर बताओ, क्योंकि ईयर मैंने 2-3 बार अंडरलाइन किया था बहुत आसानी से. अगर आप देख सकते हो, देखो नंबर्स क्या होते हैं वो एक बार स्टिक हो जाते हैं दिमाग में. मुझे देखना है आपकी रीडिंग एबिलिटी. मुझे तो याद है, बताओ. इट इज राइट देयर. Yes, that's right, Ashish, Abhishek, बहुत बढ़िया. 1863. चलो. It's right. Yes, that's right, Sanjeev, 1863. चंदन फर्स्ट में ही तो था कि एनकाउंटर फाउंडर रविन्द्रनाथ टैगोर थे. बेटा चंदन किस की बात कर रहे हो? एक बारी मैं जाके देख लेती हूँ पैसेज में फिर से जो आप कह रहे हो फर्स्ट पार्ट में. यहां पर देखो, ही एम्बॉडीज द विजन. ठीक है, एम्बॉडीज मतलब वो भी उसको फॉलो करते हैं, उसको फील करते हैं, अपने फादर की चीज को वो आगे लेके जा रहे हैं. पर स्टैब्लिश उसकी जो नींव रखी थी, जो फाउंडेशन थी, वो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही रखी थी. ठीक है, ठीक है. चंदन, इज इट क्लियर? नहीं आशीष, ऐसा नहीं है जो समझ में आए लगाते रहो. इसके लिए सेशन नहीं कर रही हूँ. अगर आप सेशन इसलिए करें कि आपको जो चीज समझ आ रही है ठीक है, जो गलत है तो आप एग्जाम में बैठ ही क्यों रहे हैं? आप प्रैक्टिस कर ही क्यों रहे हैं? राइट, देयर इज नो यूज इफ यू डोंट वांट, एंड डू नॉट गिव यूजलेस एडवाइस टू अदर्स. चले चंदन, आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया है. अगर आपको कोई डाउट है तो पूछेंगे जरूर. अगर आप इसी तरह करेंगे तो फिर कोर्स का कोई फायदा नहीं है और ये सेशंस का भी कोई फायदा नहीं है. चले, क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल क्लियर. चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन. What does the name शांतिनिकेतन mean? What does, ये फिर से देखो, ये बिल्कुल यू कैन डेफिनेटली पुट इट अप. बिना पैसेज में जाए आप आंसर दे सकते हैं. क्विकली लेट मी नो. ऑल राइट, ऑल क्लियर, ग्रेट. फटाफट से बता देंगे भाई मुझे.
abode of love, abode of peace, abode of learning, culture. Very simple. शांति निकेतन. जब शांति की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं भाई? Yes, that's right. Second, Chandan, Ashish, that's right. Abode of peace, Sanjeev, Abhishek. फटाफट बताएंगे. अभिषेक बिल्कुल करेक्ट है आंसर. संजीव बिल्कुल. That's right, option 2, which is absolutely correct. Very well done. So see, passage question approach does help. जिनको लगता है SSC में passage question approach can help you. So you don't have to be worried and you don't have to be bothered. Okay? We have one more question from this. Why did Rabindranath drop out of school? Now this we haven't done in the first part. So अब हमें second passage में जाना होगा और हमें याद रखना होगा. Let's go. Now here I'm giving you 1 minute to quickly give it a read. See, he was one of the most literary forces in India. He wrote in all literary genres, so which means he was a writer. We did this in first question ही हमने ये किया था. All right. Your answer has been marked, right? अभी मैंने मार्क भी कर दिया आंसर. So क्यों उन्होंने स्कूल छोड़ा था भाई? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे थे. वो 4 दीवारों में उनको वियर्ड लग रहा था. उनको घबराहट हो रही थी. वो सोच नहीं पा रहे थे अच्छे ढंग से. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्कूल जो है छोड़ दिया. उनको फ्री एजुकेशन, फ्री मतलब माइंड से फ्री, पैसे से फ्री नहीं. उनको फ्री एजुकेशन चाहिए थी. उनको चाहिए था कि वो फ्रीली सोच पाएं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएं. तो उनको उस प्रकार की एजुकेशन की जरूरत थी. ठीक है, क्लियर है? तो जाकर हम देखेंगे ऑप्शंस फटाफट. So he dropped out because he found the curriculum too tough. No, he wanted a formal learning. No, he felt stifled within the classroom. He was not. Yes, he felt stifled. उनको घबराहट हो रही थी, anxious हो रहे थे वो. ठीक है ना? क्या हो रहे थे? anxious. उनको घबराहट हो रही थी वो 4 दीवारी में. ठीक है? Yes, claustrophobic. चलो. Yes, that's right. So it will be option 3. Yes, that's right, Ashish, Abhishek, Sanjeev. Bilkul correct answer. Option 3 is absolutely right. Chale, next. The curriculum designed for Shantiniketan was a blend of. जो curriculum अभी हम पढ़ चुके हैं, इसी पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं. बता दीजिए मुझे कि किस हम जो यहाँ पर जाएंगे उसमें क्या है. करिकुलम किस चीज का ब्लेंड है हम पढ़ चुके हैं अभी जो हमने पैसेज पढ़ा है. आशीष, बंद जगह के डर को हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं ना. तो क्लॉस्ट्रोफोबिक, बंद जगह से डरना. ठीक है. आशीष कह रहे हैं स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्सचेंज. अभिषेक कह रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज, आर्ट एंड कल्चर. चलो देख लेंगे फटाफट से. शांति निकेतन का जो करिकुलम है, कीवर्ड क्या है? करिकुलम शांति निकेतन. अभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर ही. देखिएगा किस चीज का ये ब्लेंड है.
blending the best of Western and traditional Eastern systems of education. The curriculum revolved organically around the nature with classes being held in the open air. तो वेस्टर्न कल्चर और ट्रेडिशनल कल्चर को मिक्स किया है. किसको मिक्स किया है? वेस्टर्न और ट्रेडिशनल कल्चर को मिक्स किया हुआ है. तो यहां पर क्या होगा आंसर? वेस्टर्न एजुकेशन एंड विलेज प्रैक्टिसेस. ना कि ये, ना ही ये, ना ही ये. सिर्फ स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्सचेंज थोड़ी होता था वहां. वेस्टर्न एजुकेशन, विलेज प्रैक्टिस, सब कुछ इन्वॉल्व किया गया है, सब कुछ इंक्लूड. यस अभिषेक. फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है. कहां पर दिया हुआ है एक बार देखना जरा. मैं एक बार खुद भी देखना चाहती हूँ. बताओ अभिषेक, बताएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में कहां दिया है करिकुलम? अभिषेक मैं आ गई हूं, बताइए कहां पर. He developed a curriculum that was a unique blend of arts, human values, and cultural interchange. अच्छा, अब यहां एक चीज देख लो. शांति निकेतन किस में कन्वर्ट हो चुका है अब? विश्व भारती यूनिवर्सिटी में. शांति निकेतन किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी का करिकुलम हुआ. जबकि at Shanti Niketan one can feel his presence, his passion, his dedication, his pride in the institution. अच्छा, ये शांति निकेतन. और यहां पर क्या दिया हुआ है? ये किसके लिए दिया हुआ है? लेट मी रीड. एज वन ऑफ द एजुकेशन, the school aim to combine with the. okay, ये स्कूल के लिए. ऑल राइट. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक. यस अभिषेक बिल्कुल सही कह रहे हैं. बिल्कुल अभिषेक, आपका जवाब बिल्कुल सही है. वो स्कूल की बात है. ये ही डेवलप तो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर. यूनिक ब्रेन ऑफ. वेरी गुड, वेरी वेल सेड एंड दैट्स राइट. मैं इसको रेक्टिफाई कर देती हूँ. वो स्कूल के लिए था, लेकिन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है. नॉट 1 but 3. वेरी वेल सेड. ह्यूमन वैल्यूज, आर्ट एंड कल्चर. थैंक यू अभिषेक, आशीष, संजीव, थैंक यू. बिल्कुल करेक्ट है ये. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल अभिषेक, ही रविंद्रनाथ टैगोर होगा. आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. चलो आशीष, अभिषेक एंड संजीव, थैंक यू, थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं. एक और है पैसेज. 1 मिनट, आई एम गिविंग यू 1 minute, सो क्विकली गो थ्रू इट एंड गिव इट अ क्विक रीड. चलिए फटाफट से. ऑलराइट, स्टोरी है, पढ़ लीजिए, पूरा ही पढ़ लीजिए. आई डोंट थिंक लाइक ज्यादा डिफिकल्टी होगी. ये अगर सबने पढ़ लिया है, दिस आई गेस इज डन. फर्स्ट पैराग्राफ सबने पढ़ लिया है. सो सेकेंड पैराग्राफ भी एक बार पढ़ लेंगे, फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे बिकॉज इट्स अ स्टोरी, सो इट्स सिंपल. चले सेकेंड पैराग्राफ पर लर्नर्स, बताइए. आशीष, संजीव, अभिषेक, चंदन, quickly let me know, can we go on to the second paragraph?
चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेंगे. Quickly done. I guess this part has also been read. We will go on to the questions parts then. चले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं फटाफट. The word disfigure suggests that Bholi's looks were improved, no. Impaired, possible. Preserved, no. Enhanced, no. Positive words तो आ ही नहीं सकते. Impaired मतलब थोड़े से damaged थे. What was it? Damaged. कैसे कर सकते हैं ये? Elimination technique. Word simple दिए हैं. You can definitely guess the answer. So it will be impaired. It will be impaired, that is damaged. Disfigured. थोड़े से टेढ़े मेढ़े अजीब से थे. अभिषेक आशीष, that's right, option 2. बिल्कुल correct answer. Option 2. Chandan, that's right. Sanjeev, very good. So impaired याद रखेंगे because this is a word that has been asked in your, synonym antonyms part also. Next. Backward child in the passage means physically challenged, mentally challenged, belonging to a poor family, belonging to an underprivileged community. अब आपको पता है कि फार्मर की जो फैमिली थी, अभी हमने स्टोरी में पढ़ा, वो बहुत प्रिविलेज थी. वो प्रिविलेज थी. प्रिविलेज का मतलब वो ऐसे थे कि वो अपने घर, मतलब दे वर नॉट पुअर, दे वर नॉट एट ऑल पुअर. तो ये दो ऑप्शंस तो हो नहीं सकते. अच्छी फैमिली से थी वो. अब वो फिजिकली चैलेंज की बात कर रहे हैं या मेंटली चैलेंज की बात कर रहे हैं, बताएंगे. बैकवर्ड चाइल्ड. हम एक बार पैसेज में जाके देखेंगे क्योंकि उसको जब चोट लगी थी तब की, अब चिकन पॉक्स से उसका फेस खराब हो गया और जब उसको चोट लगी सिर में तो मेंटली, तो वो बैकवर्ड चाइल्ड एक बार हम जाके कंफर्म करेंगे कि वो क्या था. ठीक है, देखिएगा. Where is it? Okay. That was why she remained a backward child. So damaged some part of her brain. Yes. So it will be what? It will be mentally challenged. That's right. 2. That's correct. Chandan, Ashish, Sanjeev. That's correct. It will be mentally challenged. ये पैसेज में दिया हुआ है बैकवर्ड चाइल्ड. उसके बाद लिखा है उसका रीजन कि तभी वो बैकवर्ड चाइल्ड है क्योंकि उसके सिर में चोट लगी थी. And she was slow. Yes, that's right, privilege. Correct है संजीव, privilege. ये privileged है, ये आई ही है, ये मैंने ऊपर लगाया हुआ है आई. ठीक है. Any confusion until here? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े. चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट. भोली's mother agreed to send her to school because क्या कारण था कि उसकी मदर शी अग्रीड की ठीक है उसको स्कूल भेज दो. What was the reason? Why did Bholi's mother agree to send her to school?
Because Bholi was neglected at home. No. नो नो नो, उन्होंने क्या कहा था कि भाई वैसे भी तो उसका कुछ हो नहीं सकता, इससे अच्छा उसको टीचर्स के हाल पे छोड़ दो, टीचर्स संभाले, हम तो वैसे भी उसका कुछ नहीं कर सकते, टीचर्स के भरोसे छोड़ दो। मतलब वो अपना परला झाड़ रहे थे, वो अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के किसके ऊपर डाल रहे थे? टीचर्स के ऊपर, स्कूल के ऊपर। चलो लास्ट लाइन, ठीक है, फिर से एक बार रीड करा देती हूँ, बट मैंने आपको बताया अभी उसका मीनिंग क्या हो सकता है। ये रही लास्ट लाइन, बिल्कुल देखिए पैसेज, ये रहा, देखिएगा। उसकी मदर ने क्या कहा था? आई विल टेल यू व्हाट, सेंड बोली टू स्कूल एज इट इज, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, वो ऐसी शादी नहीं होगी। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, उनको उसकी चिंता करने दो, सब छोड़ दो, टीचर्स को उसके बारे में सोचो। सो दैट इज व्हाट शी वाज डूइंग, वो क्या कर रही थी? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के शी पास इट ऑन टू अदर्स, राइट? Passage is right there, Abhishek. You can see Chandan is saying 3, Sanjeev 3. Okay. Alright, so let's go back on to the question. Yes, she wanted to wash her hands off Bholi. मतलब वो अपना पल्ला वहां से झाड़ रही थी कि भाई मेरा काम खत्म, मैं कुछ नहीं करूंगी. That's right. Option 3 is absolutely right. Yes, palla jharna. Yes, that's right. Wash hands off. ये phrase है, wash hands off. ठीक है, थर्ड ही होगा चंदन, बिल्कुल. What did the smallpox attack do to Sulekha? क्या हो गया था? Smallpox के attack से सुलेखा को क्या हो गया था? It damaged her speech, it made her look ugly, it damaged her eyes, it made her dull. Very simple guys, common sense. स्टोरी तुम पढ़ चुके हो, बताओ फटाफट से आंसर. What did smallpox do to Sulekha? Second. Okay. Yes, it made her look ugly. That's right. Ugly. That's right. We did it. Except for her eyes, nothing was left. There were pock marks, right? Pock marks were there. So that's right. Option 2. It made her look ugly, which is absolutely right, Abhishek. Chandan, Ashish, that's right. That's right. How was Ramlal expected to set an example for the villagers? This is simple. The Tehsildar asked him for something, right? The Tehsildar requested, or I would say that he asked for something. What was it? What was the way, or which was the way wherein he can set he would have set an example for the villagers? What was that? Yes, definitely, Chandan, bilkul. So that is why we asked you to share the session, right? To like and share the session so that more and more people would come to know about us and they can join us in. Thank you so much, Chandan. Someone is saying third, someone is saying 1. Ashish, third is absolutely wrong. First is right. By sending his daughters to school, that is what Tehsildar said कि अगर आप अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगे, it would be an example because you are a contributor to the society. Chandan, it's absolutely correct. First, एक बारी we can go to the passage. Abhishek, Sanjeev, बिल्कुल correct है आपका answer. We can go to the passage quickly. It's given here. You must send your daughters to school. That will be, you are the representative of the government in the village and you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. This is right here. Okay? Chale. It's given there. I hope this makes sense to all of you. Alright. We have one more question related to this passage. Why was Ramlal worried about Bholi? Why was he worried about Bholi, who was also Sulekha? But she was known as Bholi. So what is that? Why was Ramlal worried about Bholi? Because
She was not willing to get educated. She was too old to get. It was difficult to arrange her marriage. It was difficult to comprehend. It would be difficult to arrange her marriage. सारी daughters की शादियां हो रही थी और हो जाती, but because she was ugly, उसकी शादी नहीं हो रहा था. No, Ashish, you can answer, Ashish. See, third, बिल्कुल correct है Ashish. That's right. You can. Sometimes what happens, this is what I'm talking, that reading ability needs to be done. You have to be sure about it. आपको ध्यान रखना होगा. It's important. 15 minutes reading every day, learners. It's important. Please ensure that. Yes, that's right. Option 3. Chandan, Sanjeev, Abhishek, Ashish. It's absolutely correct. Well done, everyone. We have yet another question. Sulekha came to be called Bholi because she was fair and pretty, healthy and strong, the youngest daughter, and not very intelligent. We should go to the passage quickly. एक बारी हम फटाफट से passage पर जाते हैं to understand this. First paragraph had the writer. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Boli, the simpleton. Simpleton मतलब because वो थोड़ी सी बेवकूफ kind of थी, that's why she was भोली, right? Easily, like she didn't have that sort of intelligence, उसके पास वो articulation नहीं था, that's why she was termed to be भोली. So what will be the answer right here? Because she was not very intelligent, इसलिए उसको भोली कहा जाता था. Yes, Asi Abhishek, yesterday we had a discussion, on Saturday we had a discussion about this. It's up to you. It's up to you, learners. You want to go for PQ, you want to go for QP, it's up to you. You're doing it with me, that's why maybe. Chandan, fair and pretty, no. She was a simpleton. देखो लिखा भी है वहाँ, simpleton. Simpleton से आपको जज करना है आंसर. Fair और pretty से कैसे पता लगेगा that she was भोली? Yes, fourth one is right, Abhishek. That's not very intelligent. At what age did Sulekha damage her brain? भाई कब उसका brain damage हो गया था? बताओ. इसके लिए एक बार जाना पड़ेगा वापस. It's here. When she was 10 months old. 10 months, ये रहा आंसर. 10 months. चलो ठीक है. देखो क्वेश्चन से पैसेज पर ही तो आए हैं अभिषेक. देखो क्वेश्चन से पैसेज पर आ गए, है ना? ये क्यूपी अप्रोच ही तो है. दोनों मिक्स मैच चल रहा है अभिषेक. चलो 10 months old हमारे पास आंसर है. So it will be option 1. Yes, that's right. चंदन, सिंपलटन का मतलब होता है बेवकूफ. सिंपलटन जिसको आप आसानी से बेवकूफ बना सकते हो. That's simpleton. An idiot. Yes, that's right. Okay, Ashish, thank you. अच्छी बात है, क्लियर है तो. So 10 months, that's option 1, which is absolutely correct. Sanjeev caught on her head. कॉट क्या है? खाट को इंग्लिश में हम कॉट कहते हैं. जो खटिया होती है ना, वुडन एंड दैट विद रोप्स, उसको हम कॉट कहते हैं. तो वो कॉट से उसका सिर लगा था, तो उसका सिर डैमेज हो गया था. ठीक है. ओके, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन. 10 months. सो दिस इज वेयर इट कम्स टू एन एंड, लर्नर्स. सो QP अप्रोच हो या PQ अप्रोच हो, इट्स अप टू यू. आपको उसको सॉर्ट आउट करना है. इट्स अप टू यू. यू कैन प्रैक्टिस विच एवर अप्रोच यू फाइंड feasible and you find apt for yourself. You can go with that. ठीक है ना? चलिए, ग्रेट लर्नर्स, यू डिड रियली वेल. एंड संजीव, आपका डाउट टेलीग्राम पे मैं अभी एड्रेस कर देती हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो. एंड ग्रेट पार्टिसिपेशन बाय यू ऑल. 11:30 पर आज ही हम 11:30 बजे मिलते हैं. जो वीकली क्विज है लर्नर्स, वो कल नहीं हो पाई थी, तो मैं आज आपके साथ 11:30 बजे जुड़ूंगी लाइव वीकली क्विज के लिए. ठीक है.
लाइव जुड़ेंगे हम 11:30 बजे वीकली क्विज के लिए. सो बी देयर विद मी एट 11:30. सारी विकैबलरी जो है लास्ट वीक की वी विल रिवाइज इट. ओके अभिषेक, टुमारो वी विल वर्क ऑन पैराजम्बल्स. पैराजम्बल एक टॉपिक रह गया है तो हम उसको फर्स्ट पहले उसकी अप्रोच कर लेंगे, फिर एक सेशन में परसों प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे हमने आज किया. ओके थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. Do not forget to like and share the video and take care.